Welcome everyone. Hope all are fine. Welcome to Odisha Civils. I'm your Ashutosh Sir. Today आज गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक जमती मु आगो क्लास रे भी हमें डिस्कस करथिले कि regarding geography optional, how it is very much important in your preparations of civil service, and खास करके it is mandatory. वर्तमान जमती pattern change है, one optional is mandatory and it's having 500 marks. So of course तार score जदि हमें देखिबा तो वर्तमान जदि हमें रेशियो कंपैरिजन करिबा, geography is one of the very popular optionals among other subjects, and जदि देखिबा कि सक्सेस रेट भी काफी it's quite appreciable. आउ जदि हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल्स विषय रे जमति लास्ट क्लास रू हिंट देथिले कि प्रति ये रे माने हमें डिस्कस करियो किछि इंपोर्टेंट जिंस जमति लास्ट टाइम मु कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विषय हमें डिस्कस करथिले, सेमति this time we will go for the some important topics like your human geography. So of course it's a scientific subject, और भी मु बहुत सारा announcement और भी बहुत जिंस हमें डिस्कस करिवा. So regarding that one जदि हमें देखिबा कि ओके जदि हमें देखिबा कि केमती रहूची geography optionals ऊपर ह्यूमन ज्योग्राफी रो पार्ट जदि मु डिस्कस करिव. ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन very important part. ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट जदि देखिबा इट्स एन very important part, and ह्यूमन ज्योग्राफी जदि हमें देखिबा कि ता रोल एटलीस्ट सेक्शन बी रे. ओके ह्यूमन ज्योग्राफी जदि तमे देखिबो यूरो ऑप्शनल पेपर 1, ओके पेपर 1 रे सेक्शन बी, ओके सेक्शन बी जोटा आछे सेक्शन बी रे इट इज एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तुमको अटेंड करिया पड़िबो. 3 हला एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3, एटलीस्ट 2 to 3 questions, at least 2 or maximum at least 2, you can say at least 2 questions जणो करिया पड़िबो, right? Okay, thank you okay, thank you. So आगु का हमें देखिबा कि ह्यूमन ज्योग्राफी रो जदि हमें देखिबा कि को पार्ट रे इफ विल गो फॉर von Thunen. Today we will discuss for the von Thunen model. Von Thunen model जानिया पूर्वरु मु कहबी कि why this model theory is so much important. Basically पिलांको लागि मु स्टूडेंट को देखि छि इन माय this 13-14 years journey रे कि मु देखि छि पिलांको maximum human geography टिके समाने feel करंती कि something like an boring and some thing like that one. But to be very frankly, this can be this can be read or learned in a very easiest way. आर भी अच्छी बहुत टेक्निक अच्छी और सी अनुसार इजी भी लगिवो और बोरिंग तो बिल्कुल भी लगिवो, बिकॉज इफ यू इन्वॉल्व विथ द डायग्राम्स एंड अदर थिंग्स एक्सप्लेनेशन सब बळे मन रख केबे भी घोषिबा कथा न. तो जते तमे घोषिबो that will the more you mugging of that will it's an big fiasco, माने बहुत सारा प्रॉब्लम हबो. जदी तमे बुझी कि मन रखिवो, okay, that will be better. So आज हमें देखियो von Thunen model विषय केमती को. So look at the model von Thunen agriculture model, von Thunen theory 100% questions आ भितर आसे. Any alternate year रे तमे देखिबो von Thunen model either way रे देइथिबो. Okay तारा तो जानिबा केमती तारा von Thunen ऊपर. He is the John Heinrich von Thunen, the scientist who is behind this one, John Heinrich von Thunen. He is basically an German geographer. तांको विषय जब देखिबो he is basically an German geographer, right? He is basically a German geographer, von Thunen. Okay, his model his model is basically your prevailing during the time of your industrialization in Europe. से समय टाइम रथला, एंड बेसिकली इट इज यूरोप सेंट्रिक. तो आज या विषय बहुत जिंस हमें डिस्कस भी करबा कि von Thunen जो भी पोस्टुलेशन देले तार रेलेवेंसी कोन आज का डेट रे, तार रेलेवेंसी कोन आज का डेट रे. इवन इफ von Thunen पोस्टुलेशन रो मॉडल को भी आज भी प्रैक्टिस करा होची इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स रे. ही वाज सच एन such an intelligent persons थिले, एंड ही वाज वेरी तांकर जो साइंटिफिक वे एनालिसिस करथिले. ओके जानिबा आगे कोन कोन जिंस को नेकी से काहा को प्रायोरिटाइज करथिले. von Thunen बेसिकली मन को von Thunen बेसिकली तीनटा जिंस को प्रायोरिटी करथिले. जस्ट हम देखिबा एठी कोन कोन करथिले. फर्स्ट जिंस रे तांकर मॉडल टा बेसिकली तीनटा जिंस डिपेंड होतला. von Thunen मॉडल 1 3 फैक्टर्स हला बेस्ड ऑन von Thunen मॉडल based on von Thunen model based on 3 factors. Okay, model based on 3 factors. तीनटा मेजर फैक्टर्स को नेकी से
factors neki karthile his model. Okay, his model based on 3 factors. One is your perishable item, jota thila perishable item, right? Perishable item. Then cost of goods, okay, cost of goods upare debo, and their proximity. Okay, cost of goods and their proximity एगुडा सब मु हला कहिबि कि ए हिंट्स गुडा बहुत सहज है एक्चुअली वंतुनियन मॉडल बहुत इजी. Okay, cost of goods and their proximity, then your transportation cost, okay, or transportation cost ए तीनटा जिनस को नहीं कि वंतुनियन मॉडल हैज बेसिकली ड्रिवन इट. गुड इवनिंग लिपुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. So এই তিনটা জিনিস নিয়ে কি ওয়ান্টুনিয়ান মডেল ওয়াজ বেসিক্যালি ওকে ড্রিভেন আউট. জাস্ট 1 সেকেন্ড. রাইট, সো আমি জানলি পেরিসেবল আইটেমস কস্ট অফ তুমি আজি দেখো এটা পড়লা পর তোমাকে লাগিব কি আচ্ছা এইটা কোন ওয়ান্টুনিয়ান মডেল, ঠিক আছে. বট দিস ইজ ওনলি এ সারফেস আইডিয়া जोटा कि हबो क्लास रे डिटेल जोटा कि मागु कहिबी. द ऑनलाइन बैचेस फॉर ओपीएससी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. Okay, online batches for the OPSC has already started. Au takku nei ki bhi mu aji bhi kahibi ki already started from last 2 weeks hela. Okay, and last jodi ame dekhiba ki yara response ta OPSC re jodi geography optional is very vital, because most of those who are the science background, engineering, even if I am also arts background, je mane bahut easy jinsa guda, but jo jinsa guda reflect kara hechi, the truth is something different that you have to understand logically. So ये हमें देखिले कि perishable items, cost of goods and their proximity and transportation cost. देखिए आगु को just look at here. जदि हमें देखिबा the Thunen agriculture model is the earliest attempt, these are the earliest attempt to explain the pattern of land use in economic terms. Okay, the pattern of land use in economic terms, basically economic terms pattern of land use सबुठ बड़ जिंस हला कि land use pattern टाकू से मेनली देथिले. जानिबा कोन Thunen कहिथिले. again the main aim Thunen का main aim कोन थिला, main aim on agriculture location was to show how and why agricultural land use varies with the distance from the market. Okay, जदि हम देखिबा कि to show why, how and okay, how and why the agriculture जदि देखिबा land use varies with the distance from the market, माने market रू नै कि basically से distance को नै कि vary करता. ता माने Thunen basically market centric ऊपर कहितले कि market, okay, and the land use pattern, माने land use pattern माने okay, and these are the land use pattern तांका दीटा जिंस थिला. okay, land use pattern ऊपर से मेजर फोकस करथले. मन रख, इट इज वेरी बेसिक जिंस. देखो कोन से जिंस यदि पढुछ land जदि तमे देखियो ह्यूमन ज्योग्राफी मॉडल थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तमे सब ना कीवर्ड को धरियो. म आगु को आहुरी नेबी पोस्टुलेट्स ना पर्सपेक्टिव्स ऊपर जतरे कि तमरो जेमति एरियल डिफरेंशिएशन, dichotomies kon, dualism kon, tome ये जो very key word गुड़ा धरिबो ना, it will be very easier to understanding. You cannot feel bored. At least 3 questions करिवार जो ताकि थाई sections B रे वर्तमान कोन हला सबु मिसै देला. So definitely you have to do that one. Section B रे भी आसुचे ना questions के तळे पके दो हला, very easy. ठीक अछि. नेक्स्ट जदि हम देखिबा कि how and why agricultural land use varies with the distance from the market, ता माने से कोन कहले मार्केट रू डिस्टेंस जेंति बढ़ी बढ़ी जाउची लैंड यूज पैटर्न से अनुसार देखिबा. वर्तमान जस्ट लुक एट द मैप हियर. एज फॉर Thunen, दिस इज द अर्बन सेंटर मार्केट. तांकर कोन थे, दिस इज द सिटी अर्बन सेंटर. एट दिस इज द अर्बन सेंटर, राइट, दिस इज द अर्बन सेंटर. से कहले कि फॉरेस्ट एंड फ्यूएल रिसोर्स एठी रहउची, इंटेंसिव फार्मिंग डायरी एठी रहउची. एज फॉर द Thunen, ओके, से कहले कि इंटेंसिव फार्मिंग माने डायरी फार्मिंग माने फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ योर मिल्क, okay, milk, cheese, okay, milk, cheese and other dairy items, milk, cheese, meat and other dairy items and other dairy products. से सब जन कोन हबो एठी भला बुझ काहे कि से कहले कि नियर द सेंटर पाखरे मार्केट, दिस इज अर्बन सेंटर और मार्केट पाखरे पेरिसेबल आइटम्स माने फ्लावर हो. ओके, एठी हम देखिथिले कोन कहली पेरिसेबल आइटम्स गुडा सब बळे मार्केट पाखरे रहबो. दिस आर द पेरिसेबल आइटम्स. एठी जदि लिखि परिबे दिस आर द पेरिसेबल आइटम्स. पेरिसेबल आइटम्स रे कोन जीवो, क्षीर जीवो हला, मिल्क, देन योर मीट
and flowers and other, okay, and other cheese and other dairy products. Kahinki? Because few hours re saman nashto he jante. So that is why he say kale ki nahi sei samar Europe pattern. Basically actually he was developed this model and based on the Germany. It's basically it belong to the Germany. So Germany re and ei pattern re use hutla. That means maximum part of Europe re bi sei samare ei jinso prevailing hotla. Okay, say so it perishable items etu rahibo. Then se kahile ki no, forest and fuel source jehetu forest and fuel source is the next. Eti mu kon deli step 1. This is the step 1. This is the step 2. Okay, mane land use pattern mane L1 mane land use 1, land use 2, then land use 3, then land use 4. Chatta thila. So eta bi कहले कि land use 3 रे 2 रे forest. तुमको लागुतो कि सर forest fuel resource कोन जेहेतु जर्मनी गोटे ठंडा जगह. Okay, because the location of the Germany हला एठी मु केम देखे सबले मु कहे कि बिलीव कि एटलास निजी संगे रखिथियो जेतले भी तमे पढुचो गो विथ द एटलास जदि तमे देखो जस्ट लुक एट द एटलास द प्लेसमेंट ऑफ जर्मनी is near to the arctic circle or above 50 degree. Just look at here Germany तमे देखुचो this is Germany, right? This is your Germany और Germany जदि तमे देखुचो is पाखा पाखी Germany रो जदि लोकेशन तमे देखुचो इट इज पाखा पाखी 45 ऊपर को अछि माने 50 पाखा पाखी तमे ठंडा जगह साइबेरिया लोअर साइबेरिया हला. तो से रीजन में कोन हबो माने निजो को ठंडा रखिया पे दे यूज यू नो टू कीप देम होम वार्म. Okay, keep their home warm and body warm. They used to fuel wood. They go for the or they prefer the fuel wood माने निया जळे की समाने warm करदु. So that is why the forest products is near to the your this dairy products, that land 2 pattern. देखो एटा एग्रीकल्चर अगेन जेते पे तमे पढुचो केते बेले भी गोटे तमे संगे संग गोटे यू नो इमोशनल हि जीवनी नाही. Don't give own opinion. सबुठ बड़ जिनस when you study any postulations or theories, always remember what the respective scientists or the persons, okay, the developers who what said, what he was propounded. Basing on that तमे करियो. हां criticism रो तमे देई परियो. Okay, आगु मु कहबी केमते इंडिया बेस्ड मॉडल केमते हेई परियो. Okay, so land 3 रे कोन तमे देखुचो land zone 3 रे हला land use zone 3 2 गला zone 3 रे तमे देखुचो zone 3 is basically crops. Okay, basically it is the crops means basically सही समय जर्मनी रे कोन होतला barley. Okay, barley हला रे oat एगुडा सब समाने सही समय oats ए सब जगह रे हला major crops for the Germany. भलो भाबे बुझो ठीक अछि. So then ranching माने livestock ranching हला पशु पालन जोटा कहंती livestock ranching. So these are the basics models. These are the basics postulation propounded by the von Thunen. See, this is only surface रे class रे तमे गले detail रे जिंसो गुडा हमें पढिबा इस नोट रे. बट मु तुमको एई जिंसो तुमको कहया जे सर्फ जो एटा एते इजी तमे खाली जदि डायग्राम करी कि बुझी दबो it will definitely be acting like an you definitely your score will be very high. So आमे सब बेले केबे ब्लेम करिवानी कि नै मु लेखितली एग्जामिनर देलनी. No, we should know the techniques and these techniques ultimately will help you to to enhance your score. Okay, आगु जिबा. So these are the pattern. आउ कोन हेई परियो डायग्राम रे. See, this is the concentric zones of land use model जोटा कि हमें देखले कि the von Thunen जेमति देखले तमे same thing जदि elaborate टिके करिजन सेटा हला major 4 zones रे थिला. Major जदि हमें देखियो city center, then market gardening or the milk products, that means the dairy products what you saw. Okay, these are the dairy products. Basically we have discussed the dairy products, right? Dairy products. Next we'll go for this one, forest and wood limbering. Forest and wood lumbering जो टाइम में देखले forest and wood limbering. Then crops with no fallow, crops with 14% fallow. अच्छा, now the come to the fallow land. Fallow land माने जोटा कि wasteland. जदि हमें कहबा कि fallow land is also known as your wasteland, right? Next, 3 field system livestock ranching. एई जगह रे मु तुमको देखिया चाहिबी कि 3 field system कोन. सेम जिंस एठी सॉरी सेम जिंस ए डायग्राम रे हम देखि परिबा. ओके, एठी तमे देखि परियो कोन तमे देखुछो दिस इज ए जगह रे दिस इज योर सेंट्रल सिटी, दिस इज योर सेंट्रल सिटी एंड दिस इज वन navigable river is going here. Okay, this is a river is flowing there, right?
and जदि तमे देखुचो these are the crop farming without fallow, crop farming with fallow pasture and 3-field system and livestock ranching. Live 3-field system सेटा को कहले okay. Thunen told that this is a 3-field system. Okay, 3-field system. What that means? This is very important. हमें जानिबा 3-field system कौन? 3-field system is basically 33% माने जो one farmer he has segregated it into the 3 field, like 33% your crops, 33% crops use. Okay, crops माने जोति की सारा हेक्टेयर जमीन नेला सेतरे कोन करिवो से 3 field रे ताको 3 भाग करिवो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 each 33%. For your information, each 33%. So 33% area using for the crops. Next 33% use for your pastures, है माने तृणभूमि पाई. Then 33%, another 33% your 33.3, let's say 33.3. ठीक है जी, 33.3, 1/3, 33.1/3, 33.3. Okay, and this is your fallow land. This is the segregations. Okay, this is the segregations done by your this Thunen. अच्छा, Thunen का model जदि हमें आहुरी describe करिबा, okay, he was imagined that in Europe conditions that there are a river is flowing in the mid of the city, like what was in the Germany, right? And other are the concentric circles, okay, concentric circle which is the surrounding there. Also Thunen आउ गोटे जिनस कोन करे जेंते 3-field system एगुडा सब मेजर जिनस लेखिला बेले तमे एटा फोकस करिवो. आउ गोटे जिनस ही वाज कहितले hinterland. Okay, he was talking about the hinterland. I'm talking about the hinterland. Okay, hinterland is the area, मन रखो, hinterland is the area जोटा कि which is away from the city, main city पाखरु बहुत दूर को सेटा hinterland. Okay, hinterland is the place which is away from the your city, okay, main city, and this is acting as an engine, mean source engine in providing the or facilitating the commodities. Commodities माने कौन crops, ठीक अछि, crops, mineral goods, हैला, mineral goods, crops, mineral goods, and your lumbering forest products for the exports, right? For exports. This is your hinterland basically. Very important to know. Hinterland ताको एटा ही कहितले कि these are the things जोटा कि तमरो hinterland, which is hinterland माने is an isolated place basically. It's an isolated state जोटा देज isolated place जे कि main city की जोगाई कौन कि crops, mineral items, mineral goods and the forest products for the export item. Again, Thunen ahuri भी कौन कहितले, Thunen also told that a farmer, okay, also Thunen told, as per Thunen it will लिखुची as per, okay, Thunen, as per Thunen, a farmer, okay, a farmer is an economic man, farmers as an economic man, ठीक है, they looks after their profit maximization, okay, their profit maximization. इस पॉइंट गुडा तमे देखियो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एटा गोटे पॉइंट से लेले. सेकंड कोन कहले, ए फार्मर इज ए रेशनल मैन, a farmer is a, okay, rational person, okay, farmer is a rational person, मन रखो. Yeah, the basic things, farmer is a rational person, से अभी के लिए farmer is also a rational person. So basically से farmer को कौन कहले, is an economic man. Economic माने तांकर main उद्देश्य ला for profit making, right? आउ गोटे जिनस सबुठु जदि हमें Thunen मॉडल आउ गोटे सबुठु बड़ जिनस मेजर आउ गोटे इंपोर्टेंट अनदर जिनस वाला कि द, ओके, द, ठीक अछि, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से आउ गोटे तांको हिसाब रे कोन थिला, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. Okay, transport cost
is directly proportional to distance ता माने with जदि city पाखरु distance टा बढ़ी जाउची okay ताले transport cost will increase okay so transport cost is देखिले transport cost will increase if cost will be increase if distance is more जदि second जदि transport cost लिखली transport cost decrease when distance is less distance is more go to from city center from market center or from city center this is the very basic things that what Thunen has told transport is direct transportation cost is directly proportional to your distance right एटा बहुत बड़ जिंस Thunen एबे जेंति हम देखिले वर्तमान ओके Thunen मॉडल ले वर्तमान कोन होछ Thunen मॉडल को बहुत सारा जदि हम देखिबा कि there are lots of other continents they are using Thunen model हैला एटी तमे देखिला Thunen model ऊपर then other continents जेंति for example हम कहबे कि यूएस रा कोन अछि Thunen जदि मॉडल तमे देखिबो यूएस रे एप्लीकेशन करा होची सो नाउ द मेजर थिंग इज जतले तमे आंसर लिखुचो ओके ऑप्शनल जतले तमे आंसर लिखुचो केबे बेले भी ना खाली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को तमे देखोनी you have to just write down the application part ki ko jagar kemti utilize kahin na because you are writing bureaucracy as an exam civil service bureaucracy ke enter korcho so see model ta ko kemti utilize kari paribo and how it is going to give the maximum benefits for the welfare of the people सेटा सब दिमाग रखियो आज जदि मैं यूएस पास ना कम डाउन टू यूएस Thunen model को यूएस रे जदि हम एप्लीकेशन करिबा जस्ट लुक एट इट दिस इज द फॉरेस्ट एरिया एंड दिस इज द कैटल एंड द sheep दिस इज द wheat माने को रीजन गला दिस इज द prairies हला prairie grassland एटा हला prairies grassland this is the prairies grassland जानि जो एटी prairies grassland is a temperate grassland we know ए पार्ट हला तमरो prairies grassland just look at here हला even if ए पार्ट रे भी तमरो अछि prairies रो मेन केमते डिवाइड करा आइछ just look at here then corn and the soybeans these are the prairies part a part रे गला then एटी देखो cotton and tobacco Missouri Mississippi river तमे एटी आके ड्रेन करछि Missouri and Mississippi river ए जगह जाछि हला this is your river system Missouri हला Missouri and Mississippi river देखि जाइछि केमते रहले हला Missouri and Mississippi river in US Mississippi river US part में applications करछि next you see the cotton and the tobacco region in US if you see this is this is your जदि हम देखिबा this is your Michigan lake okay Michigan पाखरे एटी की अछि Detroit city जदि देखिबा this is Detroit एटी Detroit ए जगह रे US रे this is your Detroit this is your एटी देखो कि एटी देखिबा न्यूयॉर्क हला एपटे this is your न्यूयॉर्क Duluth ए सब इंपोर्टेंट सिटी गुडा सब एटी अछन हला Detroit is famous for your your automobile center so ए जो जगह गडा तमे देखो सिटी सेंटर को समान देखो समान कोटा कहले जो कॉटन टोबैको आ जो ए जो तमरो जहां भी मिल्क डायरी प्रोडक्ट इट इज क्लोज टू द न्यूयॉर्क सिटी एंड दिस वन so what I want to highlight present context or present century रे different countries or different continents hela continents ho ki country ho they are applying Thunen model okay for their use again now the question comes that what about India हम India रे Thunen model कोन even if jodi question भी पचारियो Thunen model Odisha रे कोन करछ of course you have to write that one that be India government करियो that is same applicable to the other states also to be very frank okay जदि एटे मु यूएस रे कहली what about India हला नेक्स्ट जदि देखिबी इंडिया केस रे कोन what about the India एटी जदि लिखिबी what about India okay what about the India केस रे कोन हमें करिवो what about the case of India केस रे तमे केमति अप्लाई करिवो what about Indian country yes very much applicable जदि हमें देखिबा न्यू दिल्ली जदि हमें देखिबा मुंबई जदि हमें देखिबा बैंगलोर जदि हमें देखिबा कोलकाता yes Thunen model is mostly applicable and the government is practicing that one
because the perishable item perishable item which is always take place near to the city center, perishable items, and the lumbering activities, even if the crops, and followed with the fallow lands, three field system, they are always away from the city center, okay, because of the durability. Just look at the map here, you will get it now. ei jaga jem tum कहली three field system kon polo 33% crops, 33% pastures माने किए तृणभूमि चरिया पे हैला लाइफ स्टॉक रेंचिंग पे, एंड देन 33% fallow. सो एई भळे भाबरे तुम जदि एनालिसिस करिवो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज टू योर स्कोर, ओके. और जदि मैं अनाउंसमेंट करिवो एटा भल लागिला, आई होप कि यूएस पे हमें देखिले मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन टू द यूएस, सेमती इंडिया केस रे भी हम डिस्कस करि परिबो, निहात्री इंडिया केस रे भी डिस्कस होई परिबो, ओके. सो वर्तमान जदि म और गोटे अनाउंसमेंट जदि कहबी कि हमर ऑलरेडी ज्योग्राफी बैच ऑप्शनल बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. Offline and online both have started. Offline the last 3 years chalchi, but online for the OPSC, we have started, okay, already started here. That is 797809097 is my number. Those who want to can reach out, they can come, okay. There is a separate app for the Odisha civils, and through this app the classes were conducted, and already we have the from the last 2 weeks class already started. Those who want to join, and because केमती 400 350 स्कोर्स रहबो, दैट इज माय ओनर्स, बिकॉज़ जदि हम सक्सेसफुल स्टूडेंट के सर आपण केमती कहउचोंती हला मोर दायित्व. यस, इट हैज प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट 6-7 years, okay. जदि हम देखिबा these are the my topper students, okay, whether this year you see the Maitipani his scores, okay, her scores, जदि हम देखो कि श्रीकांत रा scores देखो कि सत्यजीत सर those he was scoring 400, okay, plus Rina also 300 plus, Maitri और श्रीकांत this time also nearly 300 पाखापाखि. और जदि देखिबा कि ताप्ती she was holding rank in 2020, 10th rank, she also scores near about 400, and also Prabhu Panda and 2009 OCS. So there are many more students are there, so definitely, okay, jadi nabo ki definitely it will work magic. And even if jadi hame general studies batch also has started, those who, again, the number is there, you can connect. In fact, the links are provided there, you can connect with me, TZ, Facebook, Insta, and you're also in WhatsApp, right? These are our successful students over the years, okay. So again, thank you so much, thank you everyone. So आज भी मु खाली जस्ट गोटे जिंस कहबी कि जदि हमें देखिबा हला, जदि हमें देखिबा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल्स रिलेवेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल, ओके, ज्योग्राफी ऑप्शनल जदि हमें देखिबा इट हैज गॉट वेरी स्कोरिंग. आज भी एबे भी कहबी geography optional, okay, geography optional is very, okay, very popular optional, okay, very popular, and much one can easily score, eta khahibo one can easily score, okay, one can easily score near about 350 plus aram se rahi paribo, 350 plus, and that is, okay, that is my responsibility how to give that one. So stay with me, stay connected. Again ei bhale Wantunian model bhale puni hame nuwa chapter ahuri bi Wantunian model type ro, okay. So Wantunian model basis pe emti ahuri bi other okay theories, postulations, and your perspectives will study, okay. Thank you so much, thank you everyone, we'll meet again. Thank you so much, thank you everyone, right? Thank you so much, we'll meet again. Thank you so much, thank you, have a good day, thank you, take care, bye bye, thank you.